Hello dear students, I am Dr. Veenadhari, Associate Professor from Rabindranath Tagore University. So today we are going to discuss about the RISC, CISC and VLIW architectures, different architectures we are going to discuss in this lecture. So these are the lecture objectives. After this lecture, students able to differentiate what is CISC and RISC, able to differentiate those two architectures, and they can understand easily what is VLIW architecture and the history of VLIW architecture. Okay, so these are the lecture objectives. So सबसे पहले we are talking about the CISC and RISC history. It is in 1950s. IBM initiated a research program for some recent architecture. So in 1964, it is released System 360 so by using some reduced instruction set only. In mid 1970s, so some improvement they want to implement to improve the performance of a system. So they thought complex instruction set will improve the performance of a system. So in 1975, a project initiated by IBM for Watson Research Center. And after that, it is also that CISC also does not need some improvements using complex. Also, it is not, the system performance is not improved very much widely. So again in 1979, they insisted some research invented some 32-bit RISC microprocessor by Joel Greenbaum. Again in 1984, MIPS, that is the one of the famous RISC architecture, that is microprocessor without interlocked pipeline stages. It was developed at Stanford, as well as project done at Berkeley. In 1988, overall, so they thought that RISC is not improving that much performance as well, because it is very complex. So for that with that complexity is not improving that performance of system. So they thought in 1988 RISC processors had taken over high end of the workstation market. So actually this is from 1950 to 1988, these are the history of the CISC and RISC. In between this CISC came, and again RISC came. So finally the RISC won the race using with the simple instruction also we can improve the performance of a system. They invented like that. Okay, so first of all we are talking about the CISC. What is CISC? CISC, which stands for complex instruction set of computer. Each instruction executes multiple low-level operations. So here the example is a single instruction can load from memory, perform an arithmetic operation and store the result in memory. This all will combine in a single instruction. So that's why it in CISC, complex instruction set of computer, it will contain a smaller program size because all instructions will be combined. Some instructions will be combined. So that's why it is having a smaller program size. And CISC characteristics, smaller program size, and it is having a wide variety of instructions. That means more than 1,000 instructions will be available in CISC. And some instructions will be divided for different tasks. Some instructions for special tasks, tasks used infrequently. A large variety of addressing modes, because there are so many instructions are there. So addressing modes, that means 5 to 20 addressing modes. And there will be no fixed length of instruction format. Actually, instruction format will be fixed length. We already studied, like if these many bits for the address, these many bits for the data it will be storing. So like that, it will not be fixed length. According to need of the program, it will be changed. So variable length instruction formats will be available, not only fixed. Sometimes 16 bits, sometimes 32 bits, sometimes 8 bits like length will be available. So so after the CISC,
invention. However, it is soon become that the complex instructions, it has a number of disadvantages. So they identified it is having so many disadvantages. These include a complex instruction decoding scheme, an increased size of control unit because number of instructions, number of addressing modes are more, and variable length instruction formats also there. So that's why increased size of control unit and increased logic delays also there. So these are the disadvantages of the CISC, and above are the characteristics of the RISC. So this CISC architecture is to attempt to provide a single machine instruction for each high-level language instruction. So what does it mean? Every high-level language instruction will appear, it will initiate a sequence of some micro operation machine instructions. For a single high level language instruction, there will be so many machine instructions will be there in previous system. So CISC attempted to provide a single machine instruction for each high level instruction. So this is the goal. Actually it achieved it, but it is not improved, that much improvement. It cannot perform that much improvement in the system by using the CISC architecture. There's no vary of the performance in this. So example is CISC architecture ka IBM 370 computers and Intel premium processors. These are x86 architecture. I already explained yesterday. So these are the two some not only two, these are two examples for the CISC architecture. And here for after the CISC, so then the search for the RISC it came. So become because compilers became more prevalent means at that time it is more valuable, more in a research at that time. So the majority of RISC instructions were rarely used, CISC instructions. So because it is very complex, the speed also not improving that much. High speed is not we are gaining from using the CISC. So that's why the majority of CISC instructions were rarely used. Some complex instructions were slower than a group of simple instructions performing an equivalent task. So it has been observed that you in RISC it is a simple instructions will be there, but using this simple instructions also they are performing the same task within a time using that complex instructions. uh, Comparison between the complex instructions and simple instructions. So simple instructions are performing very well. So why do we use going for the complex instructions? So that's why also the search of RISC continued, and smaller instructions allowed for constants to be stored in the unused bits of the instructions. So this would mean less memory calls to registers or memory. So smaller instructions, extra space is available, so some constants can be stored. So this would mean less memory calls to register or memory. So that's why also in the place of CISC, the search for the RISC has been has been done, okay, to implement the RISC architecture. So RISC stands for the reduced instruction set computer. It is a microprocessor that is designed to perform a smaller number of types of computer instructions so that it can operate at a higher speed. If instruction is very small, operation is very small and simple, so we can actually it can be operated in a higher speed, है ना. So suppose अपन addition आप मतलब बहुत easily जल्दी 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 बताएंगे perform करके, है ना. ऐसे division के लिए बोलेंगे तो मतलब नहीं बता पाएंगे. मतलब simple instruction is the simple, मतलब speed will be more. So there the concept of RISC, reduced instruction set computer, occurred. So here the characteristics compared with the RISC, मतलब CISC, relatively few instructions, 128 or less. So there 1000 instructions, and here 128. Relatively few addressing modes like five addressing or 4 addressing modes. There up to 20 addressing modes. Memory access is limited to load and store instructions. There will be separate instruction that is for load and store, and all operations done within the registers of the
CPU. So that's why this architecture feature simplifies the instruction set and encourages the optimization of register manipulation. Okay, so that's why CISC performance is better. The RISC performance is very much better than the CISC. So an essential RISC philosophy is to keep the most frequently accessed operands in registers and minimize register memory operations. Okay, so there we need to load again and again, and CISC here RISC, it will keep the most frequently operations in registers to minimize the latency between register and memory operations. Okay, so that's why RISC performance is better than that. So fixed length, already told, instruction format, it is a fixed length. So that's why we can hardware logic already we can design with the easily decoded instruction format. Okay, and single cycle instruction execution done by overlapping the fetch, decode and execution phases by वो पाइपलाइनिंग की कॉन्सेप्ट आपको आगे की यूनिट्स में आ जाएगा. पाइपलाइनिंग को परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए we will do the overlapping, you know. So यहाँ पर रिस्क पे overlapping of instructions we will do. And large number of registers in the processor unit, use of overlapped register windows. This is also overlapping concept will come in RISC. So overlapping means suppose the first instruction will be executed in 5 seconds, the second instruction will be start in the second up to 6 seconds. So overlapping means it will reduce the number of seconds, that means reduce the time of an instruction. So that concept will be in RISC architecture. So commercial applications, we already told, that is MIPS RISC processor, and R for 4000, Spark, ARM, and ARM already I told. These are all ARM7, ARM7, ARM9. So these are all in commercial applications of the RISC. And CISC commercial applications are System 360 through Z architecture, BAX, PDF11, Motorola, and Intel x86, Intel R80, x86. This we have instruction set architecture में अपन पढ़ चुके थे, है ना. So these are the commercial applications of CISC, and these are the commercial applications of RISC, and these are the commercial applications of CISC. So basically we should know what we need to know. So before that, RISC and CISC are the enemies, है ना, एक दूसरे से मतलब ऐसा, मतलब they are. So now they should know ये एक दूसरे का advantages भी है, disadvantages भी है. So अभी मतलब यहाँ तक, मतलब एक दूसरे से हाथ मिलाने तक आ गया, otherwise we cannot achieve the performance, है ना, single CISC के साथ या single RISC के साथ. Okay. So this is the summary of a conclusion of the RISC and CISC architecture. Okay, so now we are talking about the VLIW architecture. So यहाँ पर the full form of VLIW is very long instruction word architecture. Very long instruction word architecture. So here refers to a processor architecture designed to take advantage of the instruction level parallelism. So in third lecture, I think third lecture only, I covered that instruction level parallelism, ILP, using this resource dependency, data dependency, and control dependency. Okay, so in VLIW processor also, it will implement the instruction level parallelism to achieve the performance of a operation, to achieve the speed of the system. It will implement the in ILP, that is instruction level parallelism, है ना. So how it will achieve this type of speed? Instruction of a VLIW processor consists multiple independent operations. This will group together, and there are multiple independent functional units also will be there. Each operation in the instruction is aligned to a functional unit, and functional units shared use of the common large register file.
सो इससे पहले मैं आपको एक मतलब हु इन्वेंटेड दिस वेरी लार्ज इंस्ट्रक्शन वर्ड बाई मतलब कब आ गया था ये कैसे मतलब एक बताना चाहती हूँ. सो इन ए यूनिवर्सिटी यूएस में एल यूनिवर्सिटी में. So George Fisher, he invented first this type of architecture, not exactly like VLIW architecture. In 1980, he invented some trace scheduling architecture. ट्रेस शेड्यूलिंग आर्किटेक्चर भी ये क्या कहेंगे मतलब एक्चुअली अपन परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए देर आर 3 concepts are available. So I already told that is like overlapping of instructions, that is using the pipeline है ना, pipeline instructions and parallelism, मल्टी प्रोसेसर्स यूज करके पैरेललिज्म से अपन को सिस्टम की स्पीड को मतलब इम्प्रूव कर सकते. एक और है that is if you want to change the instruction scheduling है ना, शेड्यूल मतलब इंस्ट्रक्शन को आपको ऑर्डर ऑफ द इंस्ट्रक्शंस को चेंज करके भी आप उसकी स्पीड को इम्प्रूव कर सकते. बट दीज 3 टेक्निक्स विल बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द हार्डवेयर है ना. हार्डवेयर और इस पे मतलब ज्यादा हार्डवेयर लॉजिक की जरूरत पड़ेगा. सो विथ सिंपल हार्डवेयर लॉजिक ज्यादा कंपाइलर के ऊपर बर्डन लेकर आके सो दैट वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन दिस VLIW आर्किटेक्चर इन्वेंटेड. सो ही इन्वेंटेड इन 1980 लाइक ट्रेस शेड्यूलिंग के नाम से एंड हॉरिजॉन्टल माइक्रो कोड नाम से he invented like it is not exactly VLIW architecture. So he invented with this है ना, like horizontal microcode and trace scheduling यूज करके सिस्टम की परफॉर्मेंस में थोड़ा सा मतलब परफॉर्मेंस का इम्प्रूवमेंट लेकर आ गए थे. So under him actually John Els है ना completed the thesis under him, that is George Fisher है ना. So in 1984 में फिशर ने अपने येल यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया. छोड़ने के बाद एक स्टार्टअप कंपनी खोल दिया था. उस कंपनी का नाम है मल्टीफ्लो है ना. मल्टीफ्लो उसमें बाकी और कुछ लोगों के साथ उन्होंने मतलब खोल दिया था. दैट इज वो जॉन नेल एंड जॉन रटनबर्ग, इन दोनों मतलब तीनों मिलकर एक स्टार्टअप कंपनी खोल दिया. स्टार्टअप कंपनी खोल करके ये हॉरिजॉन्टल माइक्रो कोड स्टे मतलब ये वाला यूज करके वहां पर एक है ना सब फर्स्ट मिनी सुपर कंप्यूटर को इन 1987 पे लेकर आ गया. बट इन 19 उस टाइम पे ये वाला मल्टीफ्लो VLIW को लेकर आ गया था. बट उस एट द टाइम है ना ये चिप वाला मतलब इतना कमर्शियली इट वाज नॉट सक्सेस. सो इसीलिए इसमें क्या किया था, सभी लोगों ने इसको लाइसेंसिंग करके बेच दिया. मतलब दूसरी कंपनीज ने उसको मतलब ले लिया था. मतलब बट से नहीं मतलब कुछ कंपनीज ने पहले से सोच दिया एक ये वाला आर्किटेक्चर इट विल बी यूजफुल इन फ्यूचर. सो वो लोग इन लोगों से लाइसेंसिंग के लिए मतलब इनको कमर्शियली खरीद लिया. देन दे क्लोज दिस मल्टीफ्लो मतलब स्टार्टअप कंपनी को क्लोज कर दिया. किसने? जॉर्ज फिशर एंड सम उसकी स्टार्टअप वाले ने. फिर इन लोगों ने मतलब क्लोज करने के बाद एट द टाइम हैवलेट पैकर्ड है ना, एट द टाइम हैवलेट पैकर्ड HP कंपनी एंड HP कंपनी ने इनको अपॉइंट कर दिया. मतलब इनको एज ए एम्प्लॉयर ले लिया था जॉर्ज फिशर को. मतलब अपने क्योंकि इनसे ही खरीद लिया था वो वाला मतलब लाइसेंसिंग अपना VLIW आर्किटेक्चर को लेने के बाद इन्होंने विथ बॉब रॉय मतलब एक और फाउंडर ऑफ साइड्रोन एक कंपनी, वो भी अपना VLIW आर्किटेक्चर के लिए काम किया था. ये दोनों HP पे ज्वाइन कर लिया. ज्वाइन करने के बाद ये दोनों अपना फ्यूचर मतलब आर्किटेक्चर के लिए काम किया HP. सो साइमल्टेनियसली इंटेल एंड HP दोनों VLIW आर्किटेक्चर के लिए काम किया. सो इंटेल एट द सेम टाइम इन 1990s इट आल्सो इम्प्लीमेंटेड VLIW Intel i8060 एम्बेडेड डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर के अंदर है ना ये VLIW आर्किटेक्चर लेकर आ गए थे. Like that at the same time in these two मतलब जॉर्ज फिशर एंड who invented first इसकी ये कौन मतलब ये भी अपना HP PA RISC मतलब VLIW इन लोगों ने भी साइमल्टेनियसली मतलब दोनों लेकर आ गए थे.
सो फेमस मतलब मतलब ये VLIW आर्किटेक्चर का फेमस कंप्यूटर है सुपर हार्वर्ड आर्किटेक्चर सिंगल चिप कंप्यूटर, शार्क इसको कहते हैं। ये मतलब बहुत फेमस हो गया था। इट विल बी इन मल्टी मतलब डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में एक्चुअली यूज किया था, विच मतलब इसकी मतलब 20 to 50 मेगाहर्ट्ज का स्पीड भी अचीव किया था एट द टाइम। एंड एट द टाइम इट विल बी इम्प्लीमेंटेड है ना, 28 पैरेलल ऑपरेशंस को एट ए टाइम ये कर सकती थी, मतलब ये वाला। सो इसके बाद 2050 में रशिया ने EI ब्रश है ना 4S, ये भी एक VLIW आर्किटेक्चर को लेकर आ गया। सो एक्चुअली दिस वाज द हिस्ट्री ऑफ VLIW architecture. So father of VLIW architecture is Josh Fisher. He invented है ना, शुरुआत इन्होंने किया था। सो इसमें कैसे मतलब अपन को कंपाइलर क्या होगा है ना, इसमें क्या है, VLIW कंपाइलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैटिक शेड्यूलिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन VLIW प्रोसेसर है ना। इसमें हार्डवेयर के ऊपर ज्यादा परफॉर्मेंस मतलब ज्यादा काम करने का नहीं है। सॉफ्टवेयर मतलब कंपाइलर विल शेड्यूल द मतलब पैरेललिज्म किस किस इंस्ट्रक्शंस में है ये आइडेंटिफाई करके इट विल शेड्यूल है ना। ये स्टैटिक शेड्यूल मतलब एक बार डायनामिक शेड्यूलिंग नहीं है, स्टैटिक शेड्यूलिंग। So compiler find out which operations can be executed in parallel or which operations in sequential. It groups together these operations in a single instruction, which is a very large instruction. Okay. So compiler ensures that an operation is not issued before its operands are ready. है ना, ये मतलब ऑपरेंड रेडी नहीं हुआ उससे पहले ये नहीं होगा। So मतलब compiler की लॉजिक वेरी मतलब यहाँ पर बहुत important है। So one VLI instruction word encodes है ना multiple operations in a singles। मतलब कैसे ये encode कर सकते हैं। So various functional units यहाँ पर combined मतलब आपको मिल जाएगा यहाँ पर है ना। encodes so length of the मतलब ये इसकी इंस्ट्रक्शन की लेंथ बहुत बढ़ गया, उसी में आपको ये मतलब ये देखिएगा इसकी लेंथ क्या हो गया। VLIW instructions are usually at least 64 bits wide and on some architectures are much more wider and 1024 bits. So imagine how मतलब large it is. So that's why एक ही इंस्ट्रक्शन में आपको मतलब पूरा मतलब एग्जीक्यूट करके रखेंगे, 28 पैरेलल इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करके रख सकते हैं। सो सी हियर है ना मतलब 1024 बिट्स है। सो हियर देखिएगा यहाँ पर VLIW इंस्ट्रक्शन दीज आर द रजिस्टर। सो इतनी फंक्शनल यूनिट्स होगा मतलब दिस इज फॉर एग्जांपल ओनली। एंड 2 ALUs है, 2 लोड स्टोर है। देखिएगा ऐड रजिस्टर 1 रजिस्टर 2 मतलब ये एक सब्ट्रैक्शन भी इसी टाइम पे करेंगे, लोड भी इसी टाइम पे करेंगे, स्टोर भी इसी टाइम पे करेंगे, मतलब सब एक साथ करके सिंगल इंस्ट्रक्शन साइकिल पे इतना ये परफॉर्म कर सकते हैं। इसकी मतलब लेंथ ऐसी होगा इतना बड़ा मतलब 1024 बिट्स, 64 बिट्स टू 1024 बिट्स तक ये मतलब लेंथ है, such a big length. So consider an example. Here it is y is equal to a1x1 a2x2 a3x3 है ना। on a sequential processor how it will be है ना, पहले तो डेटा पूरा लोड मतलब हो जाएंगे। so that is equal to a3 x3 है ना ये। so a1 एंड x1 a2 x2 सो मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लाई मतलब करेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे, फिर लोड a3 x3 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे। सो टोटल इट रिक्वायर्स 11 cycles. Okay, so here in VLIW architecture it will load a1 and x1 मतलब दोनों को एक साथ लोड करेंगे। एंड यहाँ पर है ना क्योंकि it will be having the 2 load store instructions, 1 multiply unit and 1 add unit है यहाँ पर, मतलब इतना VLIW प्रोसेसर है तो अदरवाइज सब मतलब 2 add units 2 multiply units है तो ये और कम में हो जाएगा। so load a1 and x1 यहाँ पर cycle 1 पे it will perform and in cycle 2 load a2 load x2 and it will multiply because one multiply unit is available no। so next load a3 x3 and it will multiply and cycle 4 it will multiply the a3 x3 and it will add to the z1 and z2 है ना। इसको multiply a3 x3 को मतलब multiply करके यहाँ पर then it will add to this one है ना। so then आखिरी में तो ये add करेंगे। so it requires only 5 cycles।
सो देखिएगा फर्स्ट क्या कर रहे हैं, A1 X1 को लोड कर रहे हैं, ओके, देन A2 X2 को लोड कर रहे हैं एंड मल्टीप्लाई कर रहे हैं A1 X1 के साथ, है ना, ऑलरेडी इस पे लोड है ना, मल्टीप्लाई विद ये, फिर लोड A3 X3 को लोड कर रहे हैं, फिर X2 को मतलब ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, यहाँ पर फर्स्ट इंस्ट्रक्शन लोड, सेकंड इंस्ट्रक्शन की लोडिंग पे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और थर्ड इंस्ट्रक्शन को लोडिंग पे ये सेकंड इंस्ट्रक्शन का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड मल्टीप्लाई मतलब थर्ड इंस्ट्रक्शन का मल्टीप्लाई करने के टाइम पे फर्स्ट टू मतलब यहाँ आंसर्स को ऐड कर रहे हैं, फिर एट द साइकिल 5 इट इज एडिंग द मतलब 3 आंसर्स को ऐड कर रहे हैं ना, 3 आंसर्स को ऐड कर रहे हैं, सो इट रिक्वायर्स ओनली 5 cycles, okay, it requires 11 cycles, so with simple logic only, so it is by मतलब identifying the instruction level parallelism, we are improving the performance of the system by reducing the time, okay, so this is the importance of the VLIW architecture. So here is, this is the block diagram, multi-ported register and read write crossbar and switches it will using, and a read write crossbar switch it is using, okay, so this is the control unit and functional units and a different functional units and a different function, मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, स्टोर या लोड है, ये डिफरेंट फंक्शनल यूनिट्स एंड इंस्ट्रक्शन कैश है ना, इट विल बी ऑल आर कनेक्टेड विद ईच है ना, इट कंट्रोल यूनिट, इट विल इनिशिएट द सिग्नल्स है ना, ये रजिस्टर है, इट विल बी वेरी लेंथी रजिस्टर है ना, स्टोर द ऑपरेंड्स, ओके, so this is the basic block diagram of a VLIW architecture. So how it will work है ना, long instruction words are fetched from memory and common multi-ported register for file for fetching the operands and storing the results है ना, इसीलिए large register है. Parallel random access to the register file is possible through read write crossbar, because crossbar मतलब switches इसीलिए है ना यहाँ पर, तो अपन parallelly it can be access है ना, so एक मेमोरी मॉड्यूल एक को एक्सेस कर सकते, तो मतलब पैरेलली एक्सेस कर सकते. एग्जीक्यूशन इन द फंक्शनल यूनिट्स कैरिड आउट कंकरेंटली है ना, लोड स्टोर ऑपरेशन मतलब डेटा एंड द रजिस्टर फाइल, मतलब कंकरेंटली एडिशन भी लोड स्टोर भी ये सब आपको कंकरेंटली इट विल एग्जीक्यूट, कंकरेंटली मींस साइमल्टेनियसली है ना, इट विल एग्जीक्यूट है ना, and rely on the compiler to find the parallelism and schedule dependency free program code है ना, but it is more rely on the compiler है ना, not on the hardware है ना, compiler it needs to identify the parallelism and needs to schedule है ना, ये यहाँ पर एक है यहाँ मतलब working of VLIW architecture. So long instructions होगा, long मतलब रजिस्टर्स होगा, पैरेलल एक्सेस होगा, डेटा को मल्टीपल फंक्शन यूनिट्स होगा, and it will be relied on a compiler will find the parallelism and schedule the dependency. And here in architecture this VLIW architecture, that is conventional superscalar instruction, you know, receive the conventional instructions for a sequential process है ना, so it will be receiving long instruction word each comprising a field for each execution unit है ना, typically it is a 64 to 10 to the मतलब 1024 bits, much longer than the conventional machine word length है ना, so instruction word length depends on the number of execution units and code length है ना, control each unit such as operation code length of the registers, it will be depending on this instruction की this word length depend होगा इसके ऊपर. So superscalar, this is supercomputer like है ना, like done dynamically है ना, it will scheduling, data dependency is checked by hardware, need a look ahead hardware window for instruction fetch है ना, मतलब superscalar में क्या होगा, पहले आइडेंटिफाई करते रहेंगे जंप का इंस्ट्रक्शन आ रहा है क्या, मतलब यू नीड टू आइडेंटिफाई द एड्रेस, सो पहले उसकी एड्रेस को मतलब आइडेंटिफाई करके लुक अहेड हार्डवेयर विंडो एक रखेंगे, उसमें रखेंगे, ये सुपरस्केलर आगे पढ़ेंगे अपन इसको भी, बट VLIW में इतना कहानी नहीं होगा, डन स्टैटिकली है ना, इट इज कंपाइल टाइम बाय कंपाइलर, डेटा डिपेंडेंसी चेकड बाय कंपाइलर इन केस ऑफ, मतलब इसमें क्या है
सपोज यहाँ पर कंपाइलर बहुत मतलब बहुत लॉन्ग लेंथी इंस्ट्रक्शन नहीं है, स्मॉल इंस्ट्रक्शन है, सो स्पेस बैंडविड्थ इंस्ट्रक्शन बैंडविड्थ इज वेस्टेड है, थोड़ा सा छोटा इंस्ट्रक्शन है तो ये आर्किटेक्चर वेस्ट हो जाएगा. सो दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन सिस्क, रिस्क एंड VLIW. सो इंस्ट्रक्शन साइज इसमें वेरीज है ना, मतलब लेंथ फॉर्म फिक्स्ड नहीं है, बट यहाँ पर फिक्स्ड है, यूजुअली 32 बिट्स, यहाँ पर भी फिक्स्ड है ना. मतलब एक VLIW वहां पर है ना, इट विल बी वेरीज, मतलब कुछ कंप्यूटर्स में अप टू 128 बिट्स होगा, किसी में 1024, मतलब फिक्स्ड साइज होता है. ओके, वन साइज होगा, मतलब फिक्स्ड मींस वन साइज होगा. इंस्ट्रक्शन सिमेंटिक्स है ना, यहाँ पर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होगा. मेनी डिपेंडेंट ऑपरेशंस पर इंस्ट्रक्शंस मतलब यहाँ पर होता है. सो ऑलमोस्ट सिंपल ऑपरेशन होगा. मेनी सिंपल इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस एक में मतलब आपको कंबाइन करके VLIW आर्किटेक्चर में यूज करते हैं. सो रजिस्टर्स यहाँ पर फ्यू समटाइम्स स्पेशल है, यहाँ पर ज्यादा है. मेनी जनरल पर्पस, सेम लाइक मेनी जनरल पर्पस है. हार्डवेयर है, सो यहाँ पर माइक्रो कोड है ना, दिस इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द मतलब आपको कंट्रोल यूनिट लार्ज होगा, माइक्रो कोड इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर ज्यादा होगा, बिकॉज इट इज दीज इंस्ट्रक्शंस आर कॉम्प्लेक्स. बट दिस इज विथ पाइपलाइन के ऊपर है ना, मतलब इसमें पाइपलाइन यूज होता है टू अचीव द सिस्टम स्पीड को. सो यहाँ पर नो माइक्रो कोड है. सो यहाँ पर भी विथ मल्टीपल पाइपलाइंस, नो माइक्रो कोड, नो कॉम्प्लेक्स डिस्पैच लॉजिक भी ज्यादा नहीं होगा. सिर्फ आप सिंपल इंस्ट्रक्शंस को कंबाइन करके एक लार्ज इंस्ट्रक्शन बनाओ, उसको कंकरेंटली पैरेलली एग्जीक्यूट करो. So that is the advantage of the VLIW. So these are the advantages of the VLIW. Dependencies are determined by compiler and used scheduling according to function unit latencies, है ना. Functional units are assigned by compiler and correspond to the position within the instruction packet, है ना. So compiler का ज्यादा काम है. So reduces the हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी सच एज डिकोडिंग, डेटा डिपेंडेंसी डिटेक्शन, ये सब कॉम्प्लेक्सिटी है ना, ये सब मतलब कम हो जाएगा. एंश्योर्स हायर क्लॉक रेट, एंश्योर्स लोअर पावर कंजम्पशन, है ना. डिसएडवांटेजेस इज द हायर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कंपाइलर, को बहुत ज्यादा दिमाग से डिजाइन करना पड़ेगा. So compiler optimization needs to consider the technology dependent parameters, है ना, ये सब पहले कंपाइलर को काम करना पड़ेगा. सपोज कुछ कंपाइलर ने गलती की, अनशेड्यूल इवेंट्स को कर दिया, मतलब कुछ मिस हो गया, सो पूरा एंटायर प्रोसेसर रुकना पड़ेगा, है ना, मतलब इट इज वेरी ये है. सो कोड डेंसिटी इनके मतलब ज्यादा है, मतलब यहाँ पर भी मतलब बहुत सारे एप्लीकेशन मतलब कंबाइन करते हैं ना. सो सपोज छोटा मतलब 2-3 है, बाकी सब स्पेस वेस्ट हो जाएगा, कॉजेस द कोड एक्सपेंशन, हाई पावर मतलब कंज्यूम हो सकते हैं यहाँ पर. ओके, सो दीज आर द VLIW आर्किटेक्चर, मतलब डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए है, and the processing of media like compression, decompression of image data यहाँ पर. So HP, Para, RISC, Intel i8060 and EI Brush and Super Shark है ना, Super Harvard Architecture Single Chip Computer, these are the VLIW architecture इसी में implemented है. These are the commercial computers available using the VLIW architecture. So thank you very much. Today's class we have completed the differentiated the CISC and RISC, and also studied the history of VLIW and importance of VLIW and its applications. Okay.